बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं मलिक फ़याज़ अहमद वर्ड एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी और लाइक के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्यारे व्यूअर्स, आज हम ऑफ द ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट ये का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रायल के हवाले से बहुत ही अहम चैप्टर है। तो आपने क्या करना है, ये शुरू से लेकर लास्ट तक ये मेरी वीडियो को देखना है। आज हमने सेक्शन 241 से लेकर 250 तक पढ़ना है। तो आप कोशिश करें और इसको समझें कि ट्रायल कैसे शुरू होता है और कैसे इसके ब्रेक अप होता है। तो शुरू करते हैं। 241 सेक्शन 241 प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस। द फॉलोइंग प्रोसीजर shall be observed by magistrate in the trial of cases। कि मजिस्ट्रेट जो है ट्रायल में कैसे ऑब्जर्व करता है केस को। सेक्शन 241 ए, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। In all cases instituted upon police report except those tried, summary of statements of all witnesses recorded under section 161 and 164 and of the inspection route inspection note accorded by an investigation officer on his first visit to the place of occurrence। place of occurrence से लेकर दफ़ा 161 और बस 64 के बयानात और तकरीबन सारी रिपोर्ट्स जो है ना वो अदालत में जमा करवाता है आईओ। shall be supplied free of cost to the accused not less than 7 days before the commencement of the trial। 7 दिन के अंदर अंदर जो अक्यूज्ड होता है, मुलजिम होता है, तो उसको ट्रायल शुरू होने के 7 दिन के अंदर अंदर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कास्ट सप्लाई करता है। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 is such that its disclosure to the accused would be expedient in the public interest, such part of the statement shall be excluded from copy of the statement furnished to the accused in all cases instituted upon a complaint. In writing, the complainant shall a state in the petition of the complaint the substance of the accusation, the names of his witnesses and the gist of the evidence which he is likely to adduce at the trial, and be within 3 days of the order of the court under section 204 for issue of process to the accused, file in the court for supply to the accused। 3 दिन के अंदर 3 दिन में 204 के तहत within 3 days 3 दिन के अंदर the order of the court under section 204 for issue of process का इशू जो है ना 3 दिन के अंदर अंदर accused को file in the court for supply of the accused, मुल्ज़िम को फाइल जो है ना सप्लाई की जाती है करता है। एज मैनी copies of the complaint and any other documents which he has filed with his complaint as the number of the accused के नंबरिंग के हिसाब से वो फाइल की कॉपी जो है ना कंप्लेंट जो करता है वो अदालत में फाइल के साथ जमा करवा देता है। Provided that the provisions of this subsection shall not apply in any case in which the complaint has been made by a court or by a public servant acting or
purporting to act in the discharge of his official duties. अब हम पढ़ेंगे 200 सेक्शन 243 कन्वेक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ अक्यूशन. If the accused admits that he was committed the offense with which he is charged, जब मुलजिम तस्लीम कर लेता है कि मैंने जुर्म किया है जो उस पर चार्ज किया जाता है, या वो कहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, shall be recorded as nearly as possible in the words used by him, and if he shows no sufficient cause which he should not be convicted, the magistrate may convict him accordingly. तो मजिस्ट्रेट उसके मुताबिक कन्वेक्ट करता है. सेक्शन 244 प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन टू मेड. Number 1. If the magistrate does not convict the accused under the preceding section, or if the accused does not make such admission, the magistrate shall proceed to hear the complainant, if any, and take all such evidence as may he produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as the produces in his defense, provided that the magistrate shall not be bound to hear any persons as a complainant in any case in which the complainant has made by a court. Number 2. The magistrate may, if he thinks fit, on the application of the complainant or accused, issue a summons to any witnesses directing him to attend or to produce any documents or other thing. Number 3. The magistrate may, before summoning any witnesses or such application, require that his reasonable expenses acquired in attending to the purposes of the trial be deposited in court. The magistrate may, before summoning any witnesses on such application, तो उस एप्लीकेशन के मुताबिक मजिस्ट्रेट जो है ना गवाहों को समन्स इशू करता है, अक्यूज मुलजमान को, सच ए समन्स टू एनी विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड, उस किसी भी गवाह को वो जो है ना डायरेक्टिंग करता है कि कोर्ट में हाजिर हो, टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स आर अदर थिंग, कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई चीज़ भी हो अदालत में पेश होकर जमा कराए. Provided that it shall not be necessary for the accused to deposit any such expenses in court in case where he is charged. तो वो उन तमाम चीज़ों के अखराजात it shall not be necessary for the accused to deposit any such expenses in court. तो ये मुलज़म के लिए ज़रूरी ना है कि वो तमाम अखराजात जो होते हैं वो अदालत में जमा कराए. वेयर ही इज़ चार्ज, जहाँ पर उस पर जुर्म साबित किया जाता है, विद एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 months, जहाँ 6 माह की सज़ा होती है जिन केसों में, तो उनमें मुलज़म को कोई मुलज़म के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में अखराजात जमा कराए ऐसी चीज़ों के मुताबिक. सेक्शन 244A स्टेटमेंट्स मेड अंडर सेक्शन 164.
सेक्शन 244 is statement made under सेक्शन 164 के मुताबिक बयानात द स्टेटमेंट्स ऑफ ए विटनेसेस ड्यूली रिकॉर्डेड एंड सेक्शन 164 इफ इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, जब ये मुलजिम की तरफ से पेश किया जाता है करेगा, एंड इफ ही हैड नोटिस ऑफ इट, तो नोटिस करेगा, एंड वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस गवाह को जो है ना क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट की डिस्क्रिशन के मुताबिक। If such witnesses produced and examined be treated as evidence in the case for all purposes subject to the provisions of Evidence Act 1872। Section 244 Actal। If the magistrate upon taking the evidence referred to the section 244 and such further evidence, if any, as he may of his own motion cause to be produced, and he thinks fit, examining the accused, finds the accused not guilty, he shall regard it an other of acquittal। जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस केस में ना ही मुद्दई की तरफ से कोई पेश हो रहा है या मुद्दई शहादत में ताख़ीर कर रहा है, जिरह में ताख़ीर कर रहा है, और मजिस्ट्रेट को अख्तियार हासिल है कि वो इसमें मुलज़िम को बरी कर सकता है, तो वो उसको बरी कर देता है। सेंटेंसेस वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड in accordance with the provisions of section 349, he shall, if the finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law। Section 245A Procedure in case of previous convictions। In case where a previous conviction is charged under the provisions of section 221 subsection 7, and the accused does not admit that he has been previously convicted as charged in charge, the magistrate may, after he has convicted the accused under section 243 or under section 245 subsection by take subsection 2 take evidence in respect of the alleged previous conviction, and he does so shall record a finding thereon। Section 247 Non-appearance of complainant। If the summons has been issued on complaint and upon the day appointed for the appearance of the accused, or any day subsequent thereto, to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall notwithstanding anything herebefore contained accused the accused, unless for some reason he think proper to adjourn the hearing of the case to some other day, provided that where the complainant is a public servant and his personal attendance is not required, the magistrate may be dispensed with his attendance and proceed with the case, provided further that nothing in this section shall apply where the offense of which the accused is charged is either cognizance
cognizable or non-compoundable. सेक्शन 248 है जी, विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट को विड्रॉ कैसे किया जा सकता है? कंप्लेंट, if a complainant at any time before a final order is passed in any case, फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले कंप्लेनेंट जो है ना किसी भी वक्त किसी भी केस में अंडर दिस चैप्टर सेटिस्फाइज द मजिस्ट्रेट को मुतमईन करता है दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर परमिटिंग हिम टू विथड्रॉ हिज कंप्लेंट, द मजिस्ट्रेट में परमिट हिम टू विथड्रॉ द सेम एंड शैल देयरअपॉन एक्टल द अक्यूज्ड। तो वो मजिस्ट्रेट जो है ना कंप्लेनेंट की इस्तदा पर या कंप्लेनेंट जब उसे मुतमईन कर लेता है तो उसके बाद वो मजिस्ट्रेट किसी भी वक्त जो है ना मुलजिम को बरी कर सकता है, उसको रिहा भी कर सकता है, बरी भी कर सकता है। 249 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट। जब कंप्लेनेंट नहीं होता तो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाता है। इन एनी केस instituted otherwise than upon complaint, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the session judge may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage, would pronouncing any judgment either of acquittal or conviction and may thereupon release the accused। तो जब मुद्दई हाजिर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर, ट्रायल की किसी भी स्टेज पर जो है इसको ट्रायल को रोक कर प्रोसीडिंग रोक लेता है और मुलजिम को बरी या रिहा कर देता है। सेक्शन 249 ए पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्टल अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पर जज जो है ना अक्यूज्ड को बरी कर सकता है। Nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case after hearing the prosecutor and the accused, and for reasons to be recorded he considers that the charge is groundless। जब चार्ज जो है ना ग्राउंडलेस होता है तो मजिस्ट्रेट को ये पावर हासिल है कि वो अक्यूज्ड को किसी भी वक्त किसी भी ट्रायल की किसी भी स्टेज पर रिहा कर सकता है। और दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी of the accused being convicted of any offense। ठीक है जी, ये आज हमने 249 ए पढ़ लिया। अब 250 है false frivolous or vexatious accusation। Number 1, if in any case instituted upon complainant or upon information given to a police officer or to a magistrate, one or more person is or a accused before a magistrate of any offence triable by a magistrate and the magistrate by whom the case is heard acquits all or any of the accused and is of opinion that the accusation against them or any of them was false, and other frivolous vexatious, the magistrate may be his
by his order of actal if the person upon whose complaint or information the equation was made is present. Call upon him forthwith to show accused why he should not pay compensation to such accused or to other or any of such accused when there are more than one or if such person is not present direct the issue of a summonings to appear and show causes are as aforesaid. The magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that the question was false and other frivolous and vexatious may for reasons to be recorded tract that compensation to such amount not exceeding 25,000 rupees or if the magistrate is a magistrate of the third class not exceeding 2,500 rupees as the may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them. The compensation payable under subsection 2 shall be recoverable as any error of land revenue. B. When any person is imprisoned under subsection 2A, the provisions of section 68 and 69 of the Pakistan Penal Code shall so far as may be apply. 2C. No person who has been directed to pay compensation under this section shall be reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him, provided that any amount paid to any accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter. Number 3. Complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second or third class to pay compensation or has been so ordered by any other magistrate to pay compensation exceeding 50 rupees may appeal from the order insofar as the order relates to the payment of the compensation, as if such a complainant or informant made by had been convicted or a trial held by such magistrate. Number 4. When an order for payment of compensation to an accused person is made in case which is subject to appeal under subsection 3, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed or any appeal is presented before the appeal has been decided and where such order is made in a case which is not so subject to appeal, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of order. Section 250A. Special summons in case of petty offences. Any magistrate of the first class specially empowered in the behalf by the provincial government taking cognizance
of any offense, punishable only with fine, such except for reasons to be regarded in writing, issue summoning to the accused requiring him either to appear before him on a specified date in person or by an advocate, or if he desires to plead guilty to the magistrate before the specified date. By magistrate post or there a messenger, the said plea in writing, the state amount of fines specified in the summons, or if he desires to appear by any advocate and to plead guilty to the charge, the authorize in writing such advocates to plead guilty to the charge on his behalf and to pay the fine. फाइन को पे कर देते हैं प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ द फाइन स्पेसिफाइड एंड सच summons shall not be less than 25% nor more than 50% of the maximum fine provided for such offense. Subject 1 shall not apply to an offense punishable under the Motor Vehicles Ordinance 1965, WP Ordinance 1965, or under any other law which provides for the accused person being convicted in his absence on a plea of guilty. कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो इंशाल्लाह कल हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इजाज़त लेने से पहले मैं आप लोग से, आप तमाम दोस्तों से, प्यारे दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी और लाइक के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।